Welcome to the Quantum Success Mini Course, everyone. Today we'll be talking about secrets to self mastery. Over the next 4 days, we'll learn how to finally end procrastination and self sabotage while unleashing your potential, tripling your results, and exploding your productivity. So, before we begin, let us look at the two rules we should keep in mind. The first one is that there is no magic pill for this. There are absolutely no shortcuts to self mastery. And the second one is very simple, that this is not a work harder to get more strategy. It is not about hard work. Rather, it's a work smarter strategy. It's all about smart work. Remember, formal education can help you make a living, but it is only self education that will make you a fortune. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ पर्सनल ग्रोथ के साथ. क्या हैं वो तीन नियम जिसके ऊपर ये सारा पर्सनल ग्रोथ या सेल्फ मास्टरी का खेल निर्भर है. द फर्स्ट थिंग इज पीपल कैन नेवर राइज अबव द ओपिनियन ऑफ देमसेल्व्स. यानी जो भी लोगों के अपने मन में अपने प्रति धारणा है वो कभी भी उससे ऊपर नहीं उठ सकते. इसीलिए इसका सबसे सीधा सीधा सबसे अच्छा अच्छा उपाय यही है कि हम हमेशा अपने आप को एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक के लूप में डाल लें. चाहे सिचुएशन कितनी भी बुरी हो, कितनी भी ग्रिम हो, देयर शुड ऑलवेज बी अ पॉजिटिव सेल्फ टॉक, अ पॉजिटिव फीडबैक रनिंग फॉर योर सेल्फ. दूसरा लॉ है लॉ ऑफ कन्फॉर्मिटी, और ये बहुत कंट्रोवर्शियल लॉ है. हो सकता है आप में से भी कई लोग मुझसे इस बात पर अग्री ना करें, पर ऐसे बहुतेरे एग्जाम्पल्स आपको जीवन में देखने को मिल जाएंगे जहां अल्टीमेटली आप ये मानने को मजबूर हो जाते हैं कि दिस लॉ एक्चुअली वर्क्स. और क्या है ये लॉ? सिंपली पुट, दिस इज एनवायरमेंट बीट्स विल. आपकी विल पावर चाहे जितनी ज़्यादा हो, एक लेवल पे जाने के बाद आपके एनवायरनमेंट, आपकी कंडीशनिंग, आपकी सराउंडिंग्स किसी ना किसी रूप में आपके ऊपर ऐसा इम्पैक्ट डालती हैं जिसकी वजह से आपकी इच्छा शक्ति भी कहीं ना कहीं डगमगा जाती है या अपने पथ से हिल जाती है. और तीसरा लॉ फिजिक्स के ही लॉ ऑफ इनर्शिया की तरह है. इट स्टेट्स दैट चेंज इज़ हार्ड. जिन लोगों को पता है बहुत अच्छा, जिनको नहीं पता उन्हें मैं बताता हूँ कि मानव मस्तिष्क के अंदर भी देर इज समथिंग विच इज़ एज लार्ज एज द साइज ऑफ योर फिस्ट एंड इट रिजेंबल्स अ रेप्टिलियन ब्रेन. This structure, this group of structures is actually responsible for your survival instincts, is responsible for your negative fears, is responsible for your compulsive behaviors. तो इससे पार पाना, अपने सेल इनर्शिया को ब्रेक कर पाना, अपने शरीर के हर स्तर पर चेंज को एक्सेप्ट कर पाना, यह अपने आप में एक डॉन्टिंग टास्क है जो हमें करना पड़ेगा अगर हमें पर्सनल मास्टरी या सेल्फ ग्रोथ की तरफ अग्रसर होना है. So the simplest thing you can do for this is to always send messages designed to readjust your thinking. Always try to break your comfort zone. This will help you in having control over your own self, which in turn will help you towards the personal growth. And then the question arises, what is needed to win? The answer is simple. I'll tell you just 5 things that I think right now is required for you to win this battle of self mastery. So, the first thing to have is knowledge mastery. You need to have a strong foundation of knowledge in order to master your own self and be a champion of personal growth. The second thing is to release your subconscious brakes. This is all about releasing and erasing all the negative patterns of behavior that you have. Of course, it requires work from your end. Of course, it requires efforts. But once you've decided, once you've made up your mind, of course, it requires work from your end. Of course, it requires a lot of efforts. But once you've decided to do it, once you've made up your mind, it'll be very, very easy. And the third thing is to break your cell inertia, as we have talked earlier in this video. Now, the fourth step you need to take in order to win this battle of personal growth and self mastery is to take effective action. You need to be an action taker rather than just planning and planning and planning and not executing it. And last but not the least is re engineering your inner conditioning. It's all about how you handle the pressure, how you handle your negative emotions, your stress, anxieties, fears, and all those things. A lot of it has to do with your inner conditioning. So it's high time we take a step towards changing it. You see, the most important thing is to commit yourself to your personal development.
in order to turn weaknesses into strengths. There's no point saying I am interested. It literally means nothing. If you really are, always say I am 100% committed. So you need to make a firm decision for which proper goal setting and time management are subsequently required. You need to plan. You need to have an execution system and an environment in place. You need to have that self awareness to make that kind of diagnosis as to what can possibly be your self treatment, as to what exactly can be the path you can tread and master your own self. For this, you may or may not require the guidance of a coach. That is up to you. But you must plan, have the right system in place, have that self awareness, and take proper corrective measures as soon as possible. दिस इज़ द की टू सेल्फ मास्टरी. तो आप देखिए, चीज़ों को सुधारने में कम टाइम लगता है साहब, और चीज़ें बिगड़े रहने देने में समय ही समय जाता है, पूरा जीवन निकल जाता है. उस लॉस की कॉस्ट एस्टिमेट करने का प्रयास कीजिए जो केवल चीज़ों को यथास्थिति रहने देने के कारण आपको उठाना पड़ रहा है. आफ्टर ऑल, फर्म डिसीजन and 100% commitment is all it takes.